Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. This is Tuba Akram and you are watching e-learning. Before starting my video, I request my all audience to spread this knowledge, to share it with your friends and family and the one who may not have access to the paid courses. And I hope you are sharing it. Today our topic is how to say no to a person. That is basically a dilemma, and I found it very hard. Basically, it's the hardest thing for everyone to say no to a person. Because ये मैंने personally observe किया है कि हम जो है वो चीज़ों को मना नहीं कर पा रहे होते बिकॉज वी आर बिलोंगिंग टू अ कल्चर. हम एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पर हमें बचपन से तमीज़ तहजीब सारा कुछ सिखाया जाता है. सो इसलिए हम जो है वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाह रहे होते हैं और दो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो नो नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए. सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे होते हैं, ओके देखते हैं. सो इस तरह के वर्ड्स जो है हम यूज कर रहे होते हैं जब हमें जो है वो नो कहना होता है. सो दैट्स व्हाई I bring new and casual ways for you to new interesting ways basically for you to say no to a person without actually saying no. All right. So here are some casual settings as well. आप कैजुअल वे में जो है जिस तरह से कैजुअल वे में हम अपने फ्रेंड्स से फैमिली से बात कर रहे होते हैं, सिबलिंग्स से बात कर रहे होते हैं, या अपने वर्क प्लेस कोलीग से बात कर रहे होते हैं, तो उनको जो है वो हम कैजुअल सेटिंग में नो किस तरह से कह सकते हैं, पोलाइट वे में हम नो कैसे कह सकते हैं. एज आई बिलोंग टू एजुकेशनल सेक्टर, तो मैं अपने जो है स्टूडेंट्स से या अपने जो है लोगों से, टीचर्स से पोलाइट वे में नो कैसे कह सकती हूँ. एंड थर्ड वन इज अ फॉर्मल सेटिंग. फॉर्मल सेटिंग इज बेसिकली जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, जब आप फॉर्मली किसी इवेंट पर होते हैं या फॉर्मली किसी मीटिंग में, किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन में होते हैं. सो हो सकता है आपको किसी का बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस आइडिया समझ में ना आए, तो आपने उसको कैसे बहुत ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में नो कहना है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट गोइंग. स्टार्ट करते हैं. Let's start particularly with the casual. Alright, casually. So the number one casual setting, casual phrases. I'm going to flex my no muscle. Alright, I am going to flex my no muscle. So इसको आप कैजुअली यूज कर सकते हैं जब आपको कोई काम नहीं करना, अम्मी ने कह दिया नहीं लेके आओ, या जो है किसी और सिबलिंग को जो है आपने मना करना है किसी भी काम के लिए, तो यू कैन से आई एम गोइंग टू फ्लेक्स माय नो मसल. ऑलराइट, इसके अलावा कैजुअल में आप कह सकते हैं नंबर 2 इज इट्स इन टू द ओ. ऑलराइट, इट्स इन टू द ओ. ऑलराइट, this third one is basically third one is hell's no. Alright, hell's no or heaven's no. इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको किसी को strongly no कहना हो. hell's no or heaven's no. Number 4 is negative. If अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें आपके किसी फ्रेंड ने कहा हो चले चाय पे चलते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं, so you can easily say that negative. Simply a short sentence, short and effective basically. Short and effective communication is the key to the success. So negative or you can say offer decline. So here are the 4 casual phrases you can use in your daily conversation. And now do tell me whatever you like the most. Comment करके मुझे जरूर बताइएगा and personally read your comments. Alright, next setting. Now here is the polite setting. Politely आप नो किस तरह से कह सकते हैं अपने elders को, और sometimes
बीइंग अ टीचर हमें स्टूडेंट्स को बहुत पोलाइट वे में जो है आंसर करना होता है। समटाइम्स हमारे मेंटोर्स बैठे होते हैं तो उनको कभी कभी जो है हमें नो कहना होता है, एंड दैट इज अ वेरी ऑकवर्ड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन बेसिकली। सो नंबर वन इज I have too much on my plate. I have too much on my plate. So you can say that you can use in the sentence basically, I want to attend your birthday party, but unfortunately I have too much on my plate today. So इस तरह से आप जो है इस sentence को use कर सकते हैं। इसके अलावा you can say that I am afraid. I'm swamped today. I'm swamped. Swamped is a word which is used for overwork. Alright. So जब आपके पास heavy burdens हो assignment के, आपके presentations के, workload आपका ज़्यादा हो, तो उस जगह पर आप swamped को use कर रहे होते हैं। So you can say that I am afraid. I am swamped today, or I am swamped this week. I am swamped this month. So you can use it. And third one is basically in a polite way you can say that no means no. Now let it go. When you want to communicate that there is a strongly rejection and you want to strongly say no to a person, ठीक है, जब आपको बिल्कुल clear एक statement देना हो, so you can easily and formally say that in a cool way and polite way. No means no. Now let it go. Alright, and the fourth one is I wish there were two of me. So मैं जो है पर्सनली इस चीज को बहुत यूज कर रही होती हूँ। I wish I were two of me, so I could punish this one and that one as well. So here are the polite ways where you can use these sentences in your daily routine. इसमें से आपको कौन सा इजी और अच्छा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। Now here is the formal setting. Formally आप किस तरह से किसी को जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में, वर्क प्लेस पे या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अपने पेयर्स को नो कह सकते हैं फॉर्मली। किसी बिजनेस मीटिंग में हो सकते हैं तो आपको जो है किसी प्रपोजल आइडिया से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई किसी और पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट है, सो यू कैन से दैट आप इसको आसानी से कह सकते हैं आई सी द थिंग्स डिफरेंटली। You have a good idea, but I see the things differently. So आप ये बात कन्वे कर रहे होते हैं इजी वे में, एक फॉर्मल वे में, कि आपका जो आइडिया है बेसिकली वो उससे मैं जो है मेरा पर्सपेक्टिव उससे मेरे सोचने का तरीका उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर टू इज बेसिकली आई एम इनक्लाइंड टू डिसएग्री। आई एम इनक्लाइंड टू डिसएग्री। इट्स बेसिकली कि मैं जो है डिसएग्री करने की पोजीशन में हूँ इस वक्त। सो you can say that easily in a formal way. I am inclined to disagree with this business proposal. I am inclined to disagree with this lesson planning. So here are the basically types. इसके अलावा आप फॉर्मली कह सकते हैं जब आपको कोई चीज आप चाह रहे हो कि इसको डिले कर दिया जाए, कोई आपका पेयर या आपका बॉस आपसे कह रहा है, सो यू कैन से दैट यस इट हैज, इसमें चार्म तो है, इट हैज अ चार्म, बट लेट्स पार्क इट फॉर लेटर। सो लेट्स पार्क इट फॉर लेटर। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हम जब यूज कर रहे होते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि बात को यहीं पर दबा दिया जाए या इसको जो है इस वक्त के लिए छोड़ दिया जाए ताकि जो है अगले टाइम वो बंदा खुद ही वो बात भूल जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी को कहना हो या किसी को कोई चीज जो है वो कट ऑफ करनी हो, so you can easily say that in a formal way, let's park it for later. Alright. इसके अलावा you can say that when you want to compromise over the things, तो आप कह सकते हैं